ओके गाइस, सो कल हमने बहुत सारे लोगों का, इनके फैमिली मेम्बर्स का स्टोरी एक्सप्लोर किया था। कुछ लोग बच गए थे, एडिथ, मिल्टन, लिविस, डॉन, गस, ग्रेगरी वगैरह। तो लेट्स सी, आज ट्राई करते हैं ये गेम को ख़त्म करने का। सो प्लीज़ जॉइन मी एंड एंजॉय दिस अमेजिंग गेम टुगेदर। बाय द वे, आज मैं 1440p स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो आई होप द क्वालिटी इज़ बेटर देन यस्टरडे। कल भी अच्छा ही था, बुरा नहीं था, बट 1080p पे स्ट्रीम कर रहा था मैं। ओके, सो सैम का आई थिंक वी हैव एक्सप्लोर्ड। Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. पीपल पे झांक नहीं सकते क्या? आई डोंट थिंक सो। ओके, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है सैम के रूम में। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है बाहर गेम में। आई मीन दिस गेम इज़, भले ही ट्रिपल ए लेवल का ना हो, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्ट डिज़ाइन और ग्राफिक्स वाइज। इवन तो ये गेम बहुत साल पहले आया था। गेम में इस घर में आई मीन इतना सारा सीक्रेट पैसेजेस और डोरवेज है। यहाँ लिखा हुआ है मील रेडी टू ईट। कुछ तो स्टोरेज करके ये लोग After Sam died, तैयारी में थे। my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. आई होप मेरा वॉइस सही से आ रहा होगा, क्योंकि माइक में थोड़ा सा ट्विकिंग किया था हमने। लेट मी जस्ट फिक्स द माइक फॉर अ सेकंड। ओके, लेट्स गो। ग्रेगरी, ग्रेगरी बेबी थी क्या? हाँ, आई मीन Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. अरे मैं ये फ्रॉक को मूव कर रहा था, अभी म्यूजिक बज रहा है। और छोड़ दे रहा हूँ तो म्यूजिक बंद हो जा रहा है। और वो डग भी मूव कर रही है फ्रॉक के साथ। Time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. ये डकलिंग्स कहाँ से आ रहे हैं? एंड वो फ्रॉक तो आई मीन इसके कांटेक्ट में नहीं है, बट स्टिल आई कैन मूव द फ्रॉग, व्हिच इज सो वियर्ड। ओह, What his world was like. नाउ वी हैव 5 डकलिंग्स। He reminded me so much of Calvin.
Lost in his imagination. अरे वेल भी है. I think he's imagining all this. This is so fun. ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ बात करने. ये कहाँ से आ गए? ये एक्शन फिगर्स नहीं थे ना? This is fun. जैसे जैसे मैं फ्रॉक को कूदवा रहा हूँ ना तो वो भी बाकी वो भी कूद रहे हैं. ओके आई थिंक वो एक कुछ तो रखा हुआ है शेल्फ पे, उस वहाँ तक पहुँचना है इस वेल के जरिए. यस. क्या है ये? शैम्पू वैम्पू का बॉटल I'm है. worried about a baby being too happy. But I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. फन खत्म हो गया. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. वो अभी भी कूद सकता है. साउंड इफेक्ट क्या मस्त है. लेट्स सी, इधर जो लिखा हुआ है उसको गिरा सकते क्या? नहीं, बहुत ऊपर है वो. पानी होता तो गिरा सकते थे. कब आएगी इसकी मॉम? व्हील के ऊपर फिर से नहीं कूद सकता क्या? फिर से ट्राई करते हैं. आई थिंक यस, पानी फिर से चालू. About This is the so world we fun. saw. There's Oh, so shit. much I don't understand about Gregory. तो ज़्यादा ही पानी नहीं भरिएगा. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy.
want you to be happy too. I think Good luck, Kay. that's how he Love, Sam. died. Okay, so ग्रेगरी का भी स्टोरी पता चल गया. गस, डॉन, मिल्टन, लेविस, एडिथ बचा हुआ है. ईडी भी बची हुई है शायद. लेट्स सी इधर से निकलने का रास्ता है या नहीं. गस, I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. A poem for Gus, ये तो who वो है always ना said जिससे the wedding गुड्डी was a उड़ाते bad हैं. idea. Our father never Oh, hit us kids, we are at least not उड़ाएंगे very गुड्डी. hard. Before the day my brother said यार with मैं भी teenage उड़ाया करता था कभी disregard बचपन that he'd में. be dead before he'd see a wedding in our yard. It was so fun. Okay, controls inverted है जैसे असली गुड्डी का होता है. Height का. I mean, for the Gen Zs out there. Oh. My father made him come, of course, but Gus stood सही far उड़ा रहा apart, हूँ. just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I think height से ही explore करना है हमें. कंट्रोल्स इन्वर्टेड नहीं होता तो थोड़ा सा इजी हो जाता, बट कर लेंगे हम. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her. We don't need a stepmom, were the words that I I now remembered. pronounce you husband and wife. मेरे नीचे शादी चल रहा है. नीचे शादी वादी चल रहा है भाई. शिट 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 भाई ऊपर उठ. यहाँ से गोता मारना ही बोलते हैं ना. ये बीच में जो टावर टाइप का चीज़ है वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, बट When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. okay. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. बारिश में भी गुड्डी उड़ेगा क्या? सब चले गए टेंट में. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The wind has really picked up, guys. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, ये make the सारे music louder. फर्नीचर्स उसके पीछे वैसे ही है ना जैसे वो बाथ टब में सारे टॉयज थे वो फ्रॉक के पीछे. शिट 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 शिट. ओ भाई साहब. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you.
गस का स्टोरी भी डन She है. never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. चले, let's close the book and ये वाला दरवाजा तो पूरा सील लग रहा है और कोई रास्ता नहीं है क्या दूसरा? यहाँ से तो हम आए थे. लुक एट द व्यू गाइस, ऊपर से पूर्णिमा हो रहा है. ओके, डॉन. लेट्स सी, इधर से कुछ सीक्रेट पैसेज तो दिख रहा है. माउंटेन क्लाइंबिंग वाला वो है My ना? mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. ओ भाई, ये तो बहुत कोजी सा जगह है. कंप्यूटर भी रखा हुआ है. ऐसा टाइप का कंप्यूटर मेरे मामा के पास था अर्ली 2000s में. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Kolkata. Oh my god. Okay, so this is Sanjay's story. Makes sense. संजय काफ़ी ज़्यादा ही कूल सा रूम है. देयर इज दिस. अच्छा, यहाँ से वो उनका रूम दिख रहा है. आई डोंट थिंक कि हमें नीचे आना था. एक बार फिर से चलते हैं ऊपर. नाइस, इसको खोलते हैं. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस गेम में इंडिया के ऊपर भी फोकस है. कंप्यूटर लुक सो रेट्रो विंटेज टाइप वाइब्स आ रहा है यहाँ पे. इंडिया का मैप है भाई यहाँ पे. This is very very beautiful. Just imagine being here, studying here, और यहाँ पे ऐसा व्यू है. मस्त कोजी सा रूम है आपका. चलिए पढ़ते हैं. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. हेलो, सॉरी गाइस, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक कर रहा था मैं. आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द सेटअप क्योंकि दिस इज़ ऑल वेरी न्यू फॉर मी. स्ट्रीमिंग आई मीन, नॉट द सेटअप. सेटअप काफ़ी पुराना है. प्रॉब्लम क्या है ना, ये माइक मेरे और मॉनिटर के बीच आ रहा है. तो मैं इसका ऑप्टिमल वो फिगर आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ. दैट हाउ इट शुड बी. सो बियर विथ मी.
This is better, much better. Okay, I hope you're able to hear me. कुछ रोजरी बीट्स है यहाँ पर और कुछ इंसेंस स्टिक्स हैं, कैंडल्स है. ओके, यहाँ से बाहर Lewis निकलते was हैं. born a year later. Man, just look at this view. I mean the stars. दूसरी तरफ ओशन है, ओशन का आवाज़ आ रहा है. जंगल है एक तरफ. This game is just, it's incredibly beautiful guys. No matter, मतलब हाँ स्टोरी बहुत सैड है. I get it. स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड है, सब मर गए यार. बट द आर्ट डिज़ाइन इज़ जस्ट अमेजिंग. ओके चलो ऊपर चलते हैं. दिस वेरी ब्यूटीफुल. आई टेक माई स्वीट टाइम इन वाइल प्लेइंग वीडियो गेम्स ताकि मैं याद रख पाऊँ ये सारे चीज़. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Which is one of the reason कि मैं stream कर रहा हूँ, so that all the games I play live in my channel और मैं कभी वापस मुड़ के सालों बाद देख पाऊँ कि मैंने क्या क्या खेला था, क्या क्या जगह एक्सप्लोर किया था. ओके बहुत हवा I'm चल sure रहा है. Edie was happy to have her back. Mean time sage basil मस्त छोटा सा And to see home kids in the garden house है. again. क्योंकि छोटा छोटा पॉट्स एंड प्लांट्स है, बट प्लांट्स सारे मर गए हैं, जस्ट लाइक एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Come on guys, just look at this place. एक तरफ मस्त लश घना जंगल है. जस्ट इमेजिन लिविंग हियर यार. बहुत लोगों को सिटी लाइफ पसंद है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, बट मुझे तो ऐसा जगह में रहने मिल जाए तो भाई मौज आ जाएगा जीवन में. आप लोगों को कैसे जगह में रहने का पसंद है? दिस हैज़ टू बी माई ड्रीम हाउस मैन. ओशन है, समुंदर है, नीचे वाटरफॉल टाइप कुछ तो है. जंगल है मस्त. ओके अंदर चलते हैं. इमेजिन रिलैक्सिंग हियर, चाय पीते हुए, मस्त ओशन देखते हुए. सेट हो जाएगा जीवन फिर. And for a while, things were good. Almost normal. ये खुलता है क्या? I don't think so. This is kind of a small classroom for Edith and Lewis. But it didn't last. Scientific method. Okay. बहुत मस्त. ओ The भाई beginning of बहुत the end was Milton's ज़्यादा 10th हवा चल रहा birthday, है. when Edie Makes gave him a sense. castle. क्योंकि हम टॉप पे हैं और समुंदर का हवा बहुत तेज़ होता है भाई. वेयर शुड आई गो फर्स्ट? इधर जाना है या उधर जाना है? ऊपर ही चलते हैं ना. यहाँ से व्यू कैसा है? मस्त जंगल. अरे इसको कुछ तो बोलते थे, इस विंड का डायरेक्शन पता करने वाला चीज़ है ना ये.
अमेजिंग अमेजिंग। लाइफ इज स्ट्रेंज 2 में एक ऐसा जगह था, सॉरी लाइफ इज स्ट्रेंज 1 में, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट गेम, बट वो भी इतना खूबसूरत नहीं था कि दूसरी तरफ इतना खूबसूरत जंगल हो। एंड दिस ब्यूटीफुल हाउस मैन, लुक एट ऑल द लाइट्स। ओके, ये डोर तो सील्ड है, इधर से भी एक रास्ता है और ऊपर से भी। ओके सो ओके, ऊपर वाला रास्ता टूटा हुआ है तो उधर ही चलते हैं। खुलता है क्या ये? एयरक्राफ्ट का सामने वाला हिस्सा टाइप्स लग रहा है ये। ओ भाई, यहाँ पे हुक्का वुक्का रखा हुआ है। Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. कि भाई को नशा करना पसंद था, गांजा आई मीन। आप लोग मत करना भाई ये सब गेम से इंस्पायर होके, बट दिस लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ शिप, और सामने ओशन है और अंदर मस्त माहौल बना के रखा भाई ने। आई वोंट लाई गाइस, दिस इज लाइक वेरी कूल। काफ़ी कमाल का एम्बियंस है यहाँ पे, मस्त। इमेजिन ऐसी जगह में बैठ के आप रात में रेसिडेंट एविल या साइलेंट हिल टाइप गेम खेल रहे हो। एक तरफ समुंदर है, दूसरा तरफ लश जंगल है, दिस इज़ योर कंप्यूटर सेटअप। सेट रहेगा लाइफ भाई। ओके, यहाँ पे अगर गेमिंग कंसोल्स हैं, दिस लुक्स लाइक पुराना वाला निंटेंडो। ये भी कुछ कंसोल टाइप पे लग रहा है मेरे को। ये तो वो है जो हम एडवोकेट नहीं करते हैं। ओ ओ ओ, दैट्स नाइस टू सी। आई रियली लाइक द साइकेडेलिक आर्ट वगैरह जो है ना यहाँ पे, जो ग्लो कर रहे हैं। भाई को गांजा कुछ ज़्यादा ही पसंद था। जहाँ देखो मैरुआना मैरुआना हर जगह, वहाँ पे भी छोटे छोटे मैरुआना प्लांट्स के वेरिएशंस वगैरह। नीचे में भी पॉट का ये वो है। ही मस्ट रियली लाइक गांजा। भाई फूकता कैसे था? जॉइंट में फूकता था या बॉन्ग में? लेट्स सी। हुक्का हुक्का में तो नहीं फूकता होगा। I think that blue thing is a pipe and this is the ashtray, और ये बॉल में उनका सामान पड़ा हुआ है। ओके ओके, आई एम गेटिंग टू मच इनटू द गांजा स्टफ। लेट्स सी। कंप्यूटर मस्त है, डुअल मॉनिटर सेटअप है। ओके भाई, बियर वियर भी रखा हुआ है। दिस इज प्रीटी कूल, दिस इज़ वेरी कूल। हेडफोन मस्त लग रहा है, लॉजिटेक वगैरह का, लेकिन उस समय कहाँ लॉजिटेक का हेडफोन होता होगा। डैट लुक्स लाइक एन अलार्म क्लॉक और समथिंग। कीबोर्ड इज कूल, माउस भी सही है। वेरी नाइस सेटअप, वेरी नाइस एम्बियंस यार। ऊपर में भी ट्रिपी सा लाइट है। वेरी नाइस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। भाई के पास यहाँ पे फ्रिज भी है। हाई स्कूल डिप्लोमा, सैन जुआन एल। ओके, लेट्स एक्सप्लोर हिज स्टोरी। डॉन फिंच।
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly Makes sense. sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. भाई एक तो इतना अच्छा एम्बियंस और उनको कंप्यूटर सेटअप वगैरह He kept working at the cannery. दिया हुआ है, तो गांजा क्यों फूकना है इतना? But he withdrew part shit. of himself. ओके, ये कटा हुआ मछली का क्या करूँ मैं? ओके, इसको जाने दो, दूसरा उठाओ, काटो, ओके, जाने दो। In our sessions, I saw the same हमारे behavior. यहाँ पे इंडिया में वो फिश का हेड खाते हैं वैसे, मेरे पापा तो खाते हैं। His mind began to That is kind of gross. ओके, और मछली नहीं है क्या? wander. मेक सेंस, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही नशा करता था तो प्रेजेंस में तो रहेगा नहीं। कॉस इज माइंड वॉन्डेड। ओके, वो जो स्क्रीन में मिनी गेम I है वो asked him देखते to हैं। describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. ओके, मैं दो चीज़ कर रहा हूँ, एक तो मछली का सर काट रहा हूँ और वो लैबिरिंथ भी नेविगेट कर रहा हूँ। He'd सो feel his way about. Then that's it. something moved. That is a dead end. Bats. And toads. यहाँ से अंदर जाते हैं। And things that have not names. He knew it was all in his head. शिट, ये मछली अंदर नहीं जाने दे रही। ओके, But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Man, the graphics of this game just keeps getting better and better. मैं गेम में एक मिनी गेम खेल रहा हूँ और उसके साथ एक और मिनी गेम चल रहा है। I mean, this I is worried just about him then. bonkers. Daydreaming at the cannery. No wonder this game won the BAFTA Game of the Year award in 2017. This is very thoughtfully made. Ubisoft के बस का बात नहीं ऐसा गेम बनाना। I इधर spoke with से his ऊपर boss. चलते हैं और फिर But he सीज- said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. अरे भाई ये कहाँ से निकल गया? I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. भाई He built रियलिटी the से city up completely slowly, brick by disconnected है। brick. He's living in his mind. Look at that Then he made dog. musicians.
songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. But reality is completely zone out हो चुका. He held an election for mayor, What? and he won. Of course he won. He is controlling the narrative. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville. Conqueror wankerer बन गया भाई. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Tell me about it. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. He's completely in another world में वो अपने दिमाग में रह रहा कहीं तो. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen and a beautiful prince. उल्टा क्यों handsome लिखा हुआ है? queen. How is the queen handsome? Queen should be beautiful, no? Man, just look at the art of this game. Keeps getting better and better. The queen was on her own quest for sinister serpents. Maybe something. He followed the sound of her Electric sitar, not silver harp. electric sitar. This is the first time me hearing an electric sitar. Normal sitar का ही sound सुना था आज तक मैं. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Look at this For place, someone guys. who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. वही है क्या handsome My queen? imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
Bro, what? क्या ट्रांजिशन था ये? Okay, खून क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे इतना सारा? He began to forget the world we know. Okay, I think. Okay, ये मछली वाले जगह में ही है ना? I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. काफी हद से ज़्यादा मछली है. Look at this place, guys. Reminds me कि He मछली began खाए to हुए काफी despise the टाइम हो man गया with a मुझे. royal contempt. Should we go up? चलिए ऊपर जाने का ट्राई करते हैं. I think we can go I up. still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. एक सेकंड के लिए वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ रहा है और फिर अपने वो इमेजिनरी Including वर्ल्ड the में चला wise जा रहा couple who'd insisted on advising. है. भाई ने कुछ ज़्यादा ही गांजा फूक लिया. टू से द लीस्ट. बहुत गांजा पिया फूका हुआ है मैंने. भाई को पॉडकास्ट करना चाहिए. आई वुड लाइक टू नो what actually went with him. आपको क्या लगता है भाई को पॉडकास्ट करना चाहिए या नहीं? रणवीर आलाबादिया के शो में आना चाहिए His भाई को. queen waited, holding his crown. This is way too loud. Okay, let's see the handsome queen. शादी हो गई है लगता है भाई को. There was only one thing left to do. And what is that? Bend down his head. He's the king. Oh The rest I shit. think you know. Mrs. Shit. Finch, your son, was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Shit. That was very unexpected to say the least. Okay. My brother was really cool. I wish you could have met him. करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है. भाई ने सच में कुछ ज़्यादा ही गांजा फूका है. इसका इमेजिनेशन इसको कहाँ तक ले गया भाई. किंग विंग बन के सर कटवा लिया अपना. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Amazing. Whoever the art director of this game is, he has done a good job. अंदर चले. I wish we'd stayed.
ये ऐसा रबल क्या है ये चीज़? थर्मोकोल टाइप्स But I कुछ understand है। why we left. ये वाला रूम एक्सप्लोर करना है क्या? आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ है। लुक्स लाइक My mom ended up leaving everything behind. बेडरूम। What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. Oh my All that's left god. now was to tell you about that last night. है ना? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Let's see. The present like a grandma. Bhai, क्या lighting है the power इसमें? had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. ये खुलता नहीं है ना? इसके अंदर चलते हैं। That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? हाँ, सास और बहू में काफी मतभेद है। History of the Finch's fight. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Black and white है ना? Kind of black and white लग रहा है। Oh my god, tide It really was went the out. first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. I can imagine the smell, guys. मैं 4 साल चेन्नई में रहा हूँ। But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Okay, we are playing as grandma, or we are I in the got story of turned grandma. around. Okay, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। This is like I really started foggy. seeing things. Hidden है। Things I'd forgotten had ever existed.
When I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Okay, I think we are near that island fence यहाँ पर. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Shit, Edith! shit. Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Man, island पे The पहुंच ही next गए morning, the थे. band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Dandelion बोलते हैं ना इसको. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Man, पूरा joint family मर गया इसका. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. This was one of the most beautiful games I've ever played. अच्छे से अच्छा ट्रिपल ए गेम ऐसा स्टोरी नहीं बता पाता है. और इसका आर्ट डिज़ाइन इज जस्ट एम्बियंस एटमॉस्फेयर सब कुछ जस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. Amazing game, guys.
आप लोग ने अगर नहीं खेला तो ये गेम ज़रूर खेलिएगा। लो एंड हार्डवेयर में भी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। अमेजिंग कि ऐसे स्मॉल टीम ऑफ डेवलपर्स इतना कमाल का गेम बना सकते हैं, और बड़े डेवलपर्स लाइक यूबीसॉफ्ट। यूबीसॉफ्ट से मेरा कोई खुन्नस नहीं है, बट ऑल द वोक कल्चर एंड ऑल अच्छा गेम को वो लोग बर्बाद कर देते हैं। दे शुड लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ गेम। बाय द वे, वो जो नया गेम आया है क्लेयर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ही हाइप चल रहा है, वो रिजाइंड यूबीसॉफ्ट के डेवलपर्स ने बनाया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट गेम आउट वेरी सून। कोशिश करेंगे कि अगला गेम वही स्ट्रीम करें हम। पता नहीं कितने का है, 3-4 हज़ार का है शायद वो गेम। एनीवे, दिस वॉज जस्ट अमेजिंग। 2-2.5 घंटे का गेम दिल को छू गया। सो आज का स्ट्रीम यहीं पर एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में और नए लाइव स्ट्रीम में। आई एम एंजॉइंग प्लेइंग वीडियो गेम्स लाइव। दिस इज़ न्यू फॉर मी और एंड आई एम स्टिल लर्निंग, सो बी पेशेंट विद मी और ट्राई करते हैं, देखते हैं। क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33 अगर खेलने लायक है तो अगला गेम वही स्ट्रीम करेंगे। ब्लैक मिथ वूकॉन्ग भी बचा हुआ है, सो लेट्स सी, टॉस करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। दिस वाज अमेजिंग। अन्नपूर्णा बहुत तगड़ा डेवलपर है टू से द लिस्ट। स्ट्रे अगर आपने नहीं खेला तो प्लीज़ खेलिएगा। ओके गाइस, सो take lots of good care and keep on gaming. Bye for now.